I welcome you all. Let's do a problem from our coding patterns today, and the name of the problem is fruit into basket. Let's not read the problem description, and rather I'll simplify this problem for you. The problem is asking us to return the length of the longest contiguous subarray with no more than two distinct characters. The characters are fruits basically in our case, and let's suppose one is representing apple, or maybe two is representing orange, or basically any number is representing a unique fruit. So let's understand the example one. So the example one is it have fruits such as apple, and two is orange and one is apple, and return the length of the longest contiguous subarray with no more than two distinct characters. तो एक ऐसा सब एरे चूज करिए जिसके अंदर दो फ्रूट्स हों। मुझे लगता है इस केस में हम लोग पूरे एरे को ही चूज कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि इसमें दो ही टाइप के फ्रूट्स है, करेक्ट, एप्पल, ऑरेंज एंड एप्पल। इसका जो आउटपुट होगा वो 3 होगा। एंड एग्जाम्पल 2, ऐसा सब एरे फॉर्म करो जिसके अंदर दो फ्रूट्स हो। ओके, तो एक सब एरे तो ये बनता है 0 and 1, करेक्ट, और एक सब एरे बनता है 1 and 2, करेक्ट। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? ये नहीं, ये है। 3 is the output in this case. And let's understand the example number 3. एक contiguous सब array चूज करिए जिसके अंदर at most 2 distinct element 1 2 is the array. हम 3 को नहीं कंसिडर करेंगे because the moment we consider 3 in this particular sub array, we end up having 3 different unique elements which we don't want. If you want to include 3, तो हम इसका पेयर हम 2 के साथ बना सकते हैं, करेक्ट, 2 2 2। See, in this sub array we only have 2 fruits and its length is 4 basically, and इस अगर हम 1 को कंसीडर करते हैं तो कितना लेंथ था? 2। तो out of 4 and 2 which one is maximum? 4 is the answer in this case. I hope the problem statement is clear, or the simplified problem statement is clear for you. Still, if you want to read the main problem, you can pause the video and read it. Let's understand the solution approach for this problem. And the pattern that we are going to follow to solve this problem is called a sliding window. तो sliding window is one of the approaches in the data structures, जहाँ पर एक आप विंडो को फॉर्म करते हैं, और विंडो का मतलब मेरा रेंज ऑफ इंडाइसिस से हैं। तो जनरली इन दिस केस देयर इज वन स्टार्ट इंडेक्स विच इज समटाइम वी रेफर्ड एज लेफ्ट पॉइंटर, एंड देयर इज अ राइट इंडेक्सेस विच वी समटाइम रेफर एज द राइट पॉइंटर। ओके, इन दिस केस द इनपुट इज दिस इज द फ्रूट्स, और मैंने जैसे अभी आपको जस्ट बताया था कि हम एक ऐसा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन चाहिए जिसके अंदर 2 फ्रूट हो। 3 फ्रूट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। ऐसे जितने भी विंडोज़ बनते हैं उनमें से सबसे जो बड़ा विंडो बनता है वो हमारा आंसर होने वाला है। देयर आर बेसिकली 3 पॉसिबल विंडोज जहाँ पर 2 यूनिक फ्रूट्स हैं। दिस ब्लैक हाईलाइटेड पार्ट इज दी वन ऑफ द विंडो, करेक्ट। इसमें आप देखोगे तो ऑरेंज है, एप्पल है एंड ऑरेंज है, करेक्ट। तो 2 ही फ्रूट है, राइट। हम मैंगो को कंसिडर कर सकते हैं क्या इस विंडो में? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मैंगो को करेंगे तो वो 3 फ्रूट हो जाएगा विच वी डोंट वांट, विच इज वायलेटिंग द प्रॉब्लम स्टेट। एंड देयर इज वन मोर विंडो वेयर वी कैन हैव 2 डिफरेंट, ऑरेंज है, इसमें मैंगो है एंड मैंगो है। कैन वी इंक्लूड guava? No, even though there is another mango, but this is not in the contiguous section of this highlighted area, so that's why we cannot include. Similarly, in case of orange, there is one more orange here, but can we include this? No, because this is not forming the contiguous subarray. There is one more highlighted area which have 2 fruits, which is mango, guava and mango, correct। और इसका लेंथ कितना है? 4। द सेकेंड ऑप्शन में जो लेंथ है कितना? 3 है। द फर्स्ट ऑप्शन में लेंथ कितना है? 3 है। And out of these 3, which one is the longest? The last one, which has length 4. So this is going to be our solution. And let's apply sliding window here. So technically I'm going to create 4 different variables that I will keep on updating other than left and right pointer. So now your left and right pointer is pointing to the first element of this fruit input array, and there are 4 other variables, fruit 1, count 1 and its count, and there is a fruit 2 and their count variable.
जो राइट पॉइंटर रहेगा वो हमेशा जो है राइट को पॉइंट करता रहेगा एंड विल टेक दिस ऑल द फ्रूट्स वन बाय वन एंड योर लेफ्ट विल अल्टीमेटली ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टू द राइट हैंड साइड बट इट वॉन्ट मूव अनटिल अनलेस वी रियली वांटेड दिस थिंग टू हैपन। ये पूरा एल्गोरिथम कैसे होने वाला है, देखिए हम लोग एक विंडो को फॉर्म करेंगे एंड विल मेक श्योर कि उस विंडो में हमेशा 2 डिस्टिंक्ट फ्रूट ही हों और जैसे ही आपको एक कोई नया फ्रूट मिलता है विच इज नॉट इन दैट विंडो, वी विल यूटिलाइज द लेफ्ट पॉइंटर टू किक आउट वन ऑफ द फ्रूट्स एंड इन दिस प्रोसेस विल मेजर द लेंथ ऑफ द विंडो। इट विल मेक मोर सेंस, लेट्स ट्राई रन दिस थिंग, ओके। और मैंने जैसे बोला कि राइट जो है हमेशा 1 by 1 फ्रूट्स को लेता रहे। राइट इज पॉइंटिंग टू ऑरेंज, सो योर फ्रूट 1 is orange now and how many orange, just 1 और उसका count। R will move towards the right hand side and now your R is pointing to apple which is not fruit 1, right? Because your fruit 1 you have just assigned as orange, I'm writing as O, so your fruit 2 will become apple and its count is 1 and now we'll move our pointer again and R is pointing to orange which is either fruit 1 or fruit 2, correct? तो हम लोग इसके काउंट को चेंज कर 2 कर देंगे और R को हम लोग आगे फिर से मूव करते हैं। अब आप देखोगे, ओके, सो इवन बिफोर दैट इफ यू सी this is kind of forming a window, correct? This is a window, right, which is gradually increasing और इस विंडो में जो है हमारे पास 2 distinct fruits हैं which is nothing but this highlighted part of the black section, correct? And now your R is pointing to mango which is not orange and it is also not apple and now it is pointing to a different fruit। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप मैंगो को कंसिडर करना चाहते हो तो यू हैव टू किक आउट वन ऑफ द फ्रूट, इधर एप्पल और ऑरेंज। और हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग लेफ्ट पॉइंटर का यूज़ करेंगे एंड योर लेफ्ट पॉइंटर विल स्टार्ट मूविंग टू द राइट हैंड साइड। द मोमेंट इट स्टार्ट मूविंग it will also try to decrement the count of that fruit which it is pointing to। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट इज पॉइंटिंग टू ऑरेंज, तो हम लोग ऑरेंज का जो काउंट है उसको डिक्रीमेंट करेंगे एंड लेफ्ट पॉइंटर विल अगेन मूव एंड नाउ योर लेफ्ट इज पॉइंटिंग टू एप्पल और इसका भी काउंट हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे एंड योर लेफ्ट पॉइंटर विल इंक्रीज अगेन। यहाँ पर आप देखोगे तो सिंस द काउंट ऑफ एप्पल इज ऑलरेडी 0, राइट? इस केस में हम लोग क्या करेंगे, द मोमेंट काउंट पॉइंटर बिकम्स 0, फ्रूट 2 इज फ्री नाउ। हम लोग फ्रूट 2 को क्या करेंगे, हम इसको मैंगो बना देंगे और इसका काउंट जो है 1 कर देंगे। डू यू सी, ये जो सेक्शन है ये एक विंडो बना रहा है और इस विंडो में हमारे पास यूनिक फ्रूट्स हैं। आई मीन देयर आर जस्ट 2 फ्रूट्स नॉट। और अब हम लोग लेफ्ट पॉइंटर को मूव करना बंद कर देंगे एंड अगेन विल इंक्रीज द राइट पॉइंटर और R इज पॉइंटिंग टू इधर फ्रूट 1 और फ्रूट 2 विच इज पॉइंटिंग टू मैंगो। तो हम लोग मैंगो का काउंट जो है 2 कर देंगे। नाउ योर राइट इज स्टार्ट पॉइंटिंग टू guava। कैन यू इंक्लूड guava in this particular range? Actually not, it is again violating the constraint। if you want to include guava you have to kick out the previous either orange or either mango and how would you know which one has to kick out? Let's increase the left pointer। the moment you increase the left pointer, so left is pointing to orange, orange का काउंट हम लोग डिक्रीज करके 0 कर देंगे और ऑरेंज जो है 0 हो गया है, करेक्ट? एंड यू विल इंक्रीज योर लेफ्ट पॉइंटर। द मोमेंट अ फ्रूट बिकम 0, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नया फ्रूट है वो हम यहाँ पर असाइन कर देंगे, विल बिकम guava with count 1। let's increase your right pointer again। now R is pointing to mango। mango is either fruit 1 or either is fruit 2, करेक्ट? ये कोई थर्ड फ्रूट है क्या? नहीं, mango is second fruit, तो हम लोग इसका काउंट जो है 3 कर देंगे, ओके? तो your R will ultimately you'll increase R again and which is out of bound now। if you carefully observe, it is forming a window and throughout this process we'll keep on tracking the the difference of right minus left plus 1 and which is going to give us the size basically, and the maximum of the size is going to our answer। let's discuss about time complexity, and its time complexity is going to be big of n or the number of fruits in our given input, and the space complexity is going to be a constant time because we are not using any of the space। things will become more operationalized and clear the moment I start showing code to you। so let's jump directly onto the code। I'm going to show JavaScript code, but you can still look, and I think the code of other languages would be very much similar। let's start understanding the code। initially your fruit 1 is -1 or it's nothing, I don't know, and its count is 0। similarly fruit 2 is -1 which is just
a placeholder value and its count is 0, and your left is initially pointing to 0, as similarly your right is also pointing to 0. And I have added one more variable called as max window size, which is going to track the maximum size of the window throughout the our operation. And let's start the iteration. So initially, you'll just get the fruit at the right index, and if your count is 0 and your fruit at the right is not the fruit at 2, I mean, it just in case to initialize the fruit 1, you'll set the count, initialize fruit 1 at the as the current fruit, and its count would be 1. And similarly, if you encounter different fruit, you will also initialize fruit 2 and you'll set its count as 1. And on the third case, if you see a fruit which you have already seen before, could be either fruit 1 or fruit 2, you'll just increase their count. All right, let's suppose if you encounter a fruit which is not fruit 1 and it's not fruit 2, it's a third type of fruit. So do you remember what we have done? We'll just kick in left pointer in action. So what it will do, wherever that left pointer is pointing, will decrease their count. If it's fruit 1, decrease count. If it's fruit 2, which is else case, decrease count 2. The moment either count 1 or count 2 becomes 0, this while loop will fail. By doing it so, we are also increasing left pointer. जैसे ही ये केस फेल होएगा, what we'll do, I mean, ये तो श्योर है ना कि या तो काउंट 1 0 हो गया है या तो काउंट 2 0 हो गया है। अगर काउंट 2 1 0 हो गया है तो जो नया फ्रूट है ना, जो राइट पॉइंटर पे भी पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग उसे ही फ्रूट 1 मान लेंगे और उसका काउंट 1 सेट करते हैं। इफ योर काउंट 2 इज 0, फ्रूट 2 हमारा फ्रूट एट राइट बन जाएगा एंड इट्स काउंट वेरिएबल वुड बी 1। और ये सारा प्रोसेस करते हुए हम लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं करंट विंडो का, विच इज़ राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, और इस लाइन से हम लोग मैक्सिमम विंडो साइज को ट्रैक कर रहे हैं, विच वी आर सपोज टू रिटर्न एट द एंड ऑफ द कोड। सो आई थिंक दिस कोड मेक्स सेंस। You guys can also check out the code. I'll put the link of the code in the description section. If you understand my intuition and my approach, support this channel. You can like, you can subscribe, you can share. Do check out my website codingpatterns.com. Thank you for watching.